Now we have already completed with the different type of what you call as the functionalities of PHP in the previous session. I just want to have a revision of that. That is in what we have done in the previous session. Now this is visible to everybody, I think so. Now, in form of a PHP functions, we have created a PHP function and we have called a PHP function. So, in the previous session, we have gone into detail about how to create a function using a keyword called as a function, and how to call it by just directly calling the name of a function. So, whatever you write into a function within the PHP scriptlet, that can be called within a scriptlet itself. So, you have to write a code that will be calling a function within a scriptlet. So, this is the one thing, that is a function without a parameter we have seen. Then we have seen with a function with a parameter, and we can pass a parameter to the function also, like this. So we can pass a parameter to the function also by calling the function, and giving the parameter to it. So this thing we have already covered into the previous session. Then we have also seen the how to return a value from a function. So we can call a function also like this, and we can get a return value of the function also. So return is most important to be get considered whenever we are working with a function. So that is most important thing, that is you can pass a parameter and you can get a return value of that function also by applying a return variable within the function. Okay, so I think this is clear to everybody as far as the functions are, how to create and how to call a function. Yes, yes, I'm expecting yes or no from your side. Yes, sir. Okay. Now today we'll talk about the cookies and session, and we'll move to the database connectivity today itself. So PHP, the cookies concept is most important, and the session. Now see, the cookies are always being created on your browser. There is always a question been asked, what is the difference between cookies and session? What is good and what is bad? Now whenever, what is the meaning of cookies? ध्यान में रखना है. So whenever I am using the mail like this, just for a short, I want to show you on this. So I am using my mail. Now what I do is that frequently I go and I click here and I put my username and password over here, and then after that I am getting loaded into my page. Now see, what is happening over there is that you are moving your content, you are sending your request from a client, that is nothing but your browser. So I will shortly write it as browser. You are sending a request, and what is there in the request? There is nothing but your username and your password. Okay, so it goes and it receives into your server. Now server check it. सर्वर क्या करता है, वहाँ पर चेक करता है कि ऐसे नाम का कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड है क्या. Then it returns back. Now what server will be doing? Now they are moving. Now the server again will be moving its request, its loaded page to the client. तो ये client की तरफ फिर से वो home page open करता है. Which home page? This your Gmail mailbox home page is been transferred. Now it is transferred. Now it is landing that request with some options, with some responses. That response is sent to the client, and what is that client? Like client is nothing but your browser. So browser is this. Now see, everything, the movement of your client with username and password. Now this is a client with sending username and password, and here we are passing it to another destination, and here there is one protocol being used called as a HTTP protocol. Now this HTTP protocol works on port number 80, everyone knows. Now you keep in mind this protocol is stateless protocol, जिसको हम गजनी बोलते हैं बहुत बार. गजनी means what? He don't know, यानी उसको एक ही चीज़ पता है कि ये मुझे यहाँ से जाना है और मुझे गूगल उन्होंने बोला है gmail.com, तो मैं gmail.com के सर्वर पे जाऊंगा. जाने के बाद वो भूल जाएगा कि उसको किसने भेजा था. So he never remembers what is a username and what is a password. एक बार उसने सर्वर पे लैंड किया, उसने उसका डेटा उसके पास दे दिया, तो वो भूल जाता है क्या है उसके पास और उसको किसने बुलाया था या फिर किसने उसको भेजा था. ही नेवर अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, if I do some setting in my browser here, if I do some setting in my browser, that is I don't allow the cookies and session to be maintained. अगर मैंने कुकीज़ और सेशन को मेंटेन करने की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर दिया मेरे ब्राउज़र में जाके, यू विल सी योर रिक्वेस्ट विल मूव
with a port number of HTTP with port number 80 into a server, बट सर्वर वो रिस्पॉन्स आपके पेज के ऊपर कभी नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड यानी कौन से कंप्यूटर ने उसको कॉल किया था. द थिंग इज दैट द हिडन पार्ट विच इज मूविंग whenever you are calling any portal, any server, the hidden thing is that you are concatenating, you are passing some written input, hidden information from your machine, that is from your browser to the server, and the thing is nothing but your cookies. If are blocked, you will never ever get connected to the server, and your server will never ever will get connected to the client. So there is no connection being connected between the client and server if the cookies are not activated. नाउ दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर कुकीज नहीं रहेंगे तो आप कभी भी ऐसे एप्लीकेशन के साथ हमेशा के लिए लॉगिन कभी नहीं हो सकते. आप ब्राउज कर सकते हैं, यू कैन ब्राउज लाइक एनीथिंग. आप जाके यूनी पुणे के साइट पे जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन साइडेड मतलब क्या, मैंने अगर यूनी पुणे के साइट को ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर दिया एंड व्हेन आई क्लिक एनी पेज, दैट पेजेस इज गेटिंग लोडेड, और वो मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर मेरा कनेक्शन कंटिन्यूस नहीं है. इट इज़ नॉट माई कनेक्शन, कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं है. बिकॉज देखो, मैंने मेरे मेल में जाने के बाद व्हेन आई क्लिक ऑन माई इन सेंड मेल्स और व्हेन आई क्लिक ऑन माई इनबॉक्सेस, तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, डायरेक्टली कनेक्ट. ये सब रिकॉर्ड सर्वर के ऊपर है. मैंने सेंड मेल में देखा तो इट इज सेंडिंग में द डिटेल्स ऑफ द सेंड मेल. व्हेन आई क्लिक ऑन इनबॉक्स, द इनबॉक्स डिटेल्स आर बीन डिस्प्लेड. सो माई ब्राउजर is directly connected to the server. But when I talk about the Unipune website, it is not dedicated. Now see, when I click on any URL, just I go for examination, now it is just opening me the page. It is just a request and response. मैंने रिक्वेस्ट को भेज दिया, मैंने रिस्पॉन्स को ला डाला. ओके, यानी मैंने ये पेज के ऊपर सिर्फ मुझे एग्जाम का पोर्टल दिखाएगा. व्हेन आई गो फॉर एनी रिजल्ट, तो मुझे सिर्फ रिजल्ट का स्टैटिक पेजेस विल बी कनेक्टेड टू मी. अगर मेरे को रिजल्ट देखना है तो व्हेन आई जस्ट क्लिक ऑन इट, द पेजेस विल बी लोडेड ऑन माय वेबसाइट. तो ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज इनडायरेक्ट कनेक्शन. यहाँ पर मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं, जस्ट मुझे सर्वर का पता है और मैं सर्वर का पेज पता है, और मैंने हाइपर लिंक से सिर्फ उस पेज को नेविगेट कर रहा हूं. दिस इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बेसिक कनेक्टिविटी, where just there is a connection of a browser and a server, but that is not a dedicated connection between the client and server. What is dedicated connection? Dedicated connection यानी मैं मेरे अकाउंट में लॉगिन करूंगा और मेरे अकाउंट की पूरी डिटेल as and when I click it should be reflected on my page. And to do this operation there is always the cookies. देखिए ये मेरा मेल आईडी है. It is always and cookies and sessions been maintained. Cookies is been maintained by the client. ध्यान में रखना, द कुकीज आर ऑलवेज मेंटेन बाय द क्लाइंट यानी ब्राउजर. यानी मैं अगर मेरी रिक्वेस्ट भेजूंगा विद यूजर नेम एंड पासवर्ड विद HTTP प्रोटोकॉल 80 नंबर टू द सर्वर, सर्वर विल बी रिस्पॉन्डिंग मी द पेज, और रिस्पॉन्ड करने के बाद वो मेरे पेज पे आ जाएगा, यानी मेरे ब्राउजर पे आ जाएगा. बट उसको खोलने का जो इंतजाम होता है, यानी खोलने के बाद किसने खोलना चाहिए, इफ इट इज मेंटेनिंग अ कुकीज of username and password, it will be verifying it again on a browser कि हाँ यही वो बंदा है कि जिसने वो रिक्वेस्ट की थी. and with the check of this username and password with the help of a cookies, it will be opening the page on your screen. तब जाके ये पेज आपके ऊपर, आपके ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा. अगर कुकीज नहीं मेंटेन करेंगे तो ये पेज कभी नहीं ओपन हो जाएगा. दिस यू कैन चेक इट ऑन योर ब्राउजर ऑल्सो. आप जाके ब्राउजर में कुकीज को डीएक्टिवेट कर दो, यू विल फाइंड आप कितना ही यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, आपकी रिक्वेस्ट जाएंगे, रिस्पॉन्स आएगा, पर आप कभी लॉगिन नहीं कर सकते. दिस विल नॉट अलाउ, ब्राउजर विल नेवर एवर अलाउ यू टू ओपन द पेज, क्योंकि इट इज नॉट बीइंग कनेक्टेड कंटिन्यूसली. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्राउजर हमेशा इंटरनली कुकीज क्रिएट करता है और वो मेंटेन करता है. नाउ कैन वी डू विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, वी कैन डू विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP. दैट इज वी कैन क्रिएट अ cookies, we can set up cookies, and we can delete the cookies also. So that type of operations we will be doing here in your PHP, to creating a cookies and deleting a cookies. Now so there are some more important thing, drawbacks of cookies. Cookies, whenever it is created,
देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ गेटिंग हैक्ड, आपकी सिस्टम हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुकीज़ आर नॉट सिक्योर्ड कंपेयर टू सेशन बिकॉज दे आर क्रिएटेड ऑन द क्लाइंट मशीन। आपका ब्राउज़र उसको मेंटेन करता है। अगर आप साइबर कैफ़े में उसको यूज़ करते हैं, अगर आपने आपने लॉग आउट किया है और आप निकल के गए, any lay person if it is a hacker he can catch your cookies and what is this cookies contain, आपका यूजर नेम और पासवर्ड वो कैच करेगा और आपके मेल में या फिर आपका अगर बैंक अकाउंट होगा उसमें जाके लॉगिन करके कुछ भी माल प्रैक्टिसेस कर सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट whenever you are working with your ब्राउजर्स इन अ साइबर कैफे, सेटिंग में जाके आपको आपकी कुकीज़ डिलीट करना आदत डालनी है। बिकॉज व्हाट इज दैट इन कुकीज, कुकीज आर नथिंग बट द हिडन इंफॉर्मेशन ऑफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो ये मैं एक ब्राउजर में दिखा रहा हूँ कि वेन एवर यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस there is always an cookies, see this cookies and are allowed, allow all cookies। अगर मैंने ये डीएक्टिवेटेड कर दिया तो मैं कभी भी लॉगिन नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना। सो यू कैन यूज दिस, जैसा मैंने यहाँ पे ये मेरा कुकीज़ है जिसने ये कुकीज़ मेंटेन करके रखा है, दैट इज आईडी एंड पासवर्ड। यू कैन डिलीट दिस कुकीज़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Okay, so it is always been preferred that whenever you are working with cookies, it is always preferred that you should go and you should clear the browser data which contains a cookie, a cache information and a history। तो ये आदत हमेशा डाल दो अगर आप कोई ले पर्सन का ब्राउजर यूज कर रहे हैं। अगर आप आपका खुद का ही यूजर कर रहे, जैसे पेमेंट गेटवेज की इंफॉर्मेशन होती है, everything is stored into your settings, into your cookies. So you have to keep in mind whenever you are moving using any browser, make a habit to delete the cookies because cookies are always stored on your client machine. Okay, is it clear to everybody? Cookies, a concept of cookies. Now there are drawbacks of cookies that this is the object being created on your client machine। और आप बोलेंगे सर इतना अगर इंफॉर्मेशन है तो ये सर्वर क्यों नहीं मेंटेन करता, ये जो कुकीज़ है ये इंफॉर्मेशन आप सर्वर पे क्यों ना रखते। नाउ सी सर्वर आल्सो सब मेंटेन सम इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी ब्राउज़र के ऊपर आज को आप कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखते हैं, कुकीज़ उसको बोला जाता है। द ऑब्जेक्ट विच इज़ क्रिएटेड ऑन अ सर्वर इज़ नथिंग बट योर सेशन। ध्यान में रखना है, इट इज़ ऑलवेज अ सेशन। सो client side object that maintain your username and password is called as a cookies, and server side object that maintains your username and password information is called as a session। Now who is more secured? It is always a server. Server is always a secured because there are lot many firewalls, there are antiviruses been loaded into your server that will never allow the person to fetch your session information, that is like your username and password। But when we talk about the browser is an application that is installed on your system that contains a user and password. Any lay person can work out on this one। So whenever you are doing any bank transaction, it is always created, you keep in mind, जब भी हम कोई बैंक का एप्लीकेशंस बनाते हैं, बैंक एप्लीकेशंस आर ऑलवेज क्रिएटिंग अ सेशन नॉट कुकीज, बिकॉज कुकीज आर नॉट सिक्योर्ड। it cannot be made secured। you can try to make it secure but you cannot make it 100% secure। this thing you have to keep in mind। so आप बोलेंगे सर ये इसकी क्या ज़रूरत है, because without cookies you cannot get log on with the system। ये ध्यान में रखना है, cookies are always required। but इनमें आप कुछ कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, यानी क्या उसके अंदर आप टाइम बाउंड डाल सकते हैं, एक्सपायरी डाल सकते हैं। 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट्स के बाद आप उसको वो कुकीज़ को ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन आर नाउअडेज अवेलेबल इन योर ब्राउजर एंड इन टू योर प्रोग्रामिंग ऑल्सो, कि विद इन 1 मिनट और विद इन 2 मिनट्स और विद इन 30 seconds you can delete your cookies automatically। so there is no chance of getting hacked। but cookies are required and sessions are also required। so cookies are nothing but the objects which are created on a client and sessions are the objects which are created on a server। so don't say I'm not saving it, so I'm moving towards my content। so the notes, so cookies are a text files, you keep in mind these are always a text file stored in the client computer and they are kept on tracking purpose। they are used for the purpose of tracking। जैसे मैंने बोला है कि these are only used for the purpose of tracking, किसने रिक्वेस्ट दी थी और उसका ट्रैकिंग वो कर सकते। सो PHP transparently support HTTP cookies। this is the most important thing that HTTP need to be supported by the PHP। अगर नहीं किया तो you cannot do a database connectivity program or you cannot do your username and password a connection, a dedicated connection to your application। so there are 3 steps involved in identify and returning the users।
तीन स्टेप्स होते हैं हमेशा. सर्वर स्क्रिप्ट एंड सेंड्स अ सेट ऑफ कुकीज टू द ब्राउजर, फॉर एग्जांपल नेम, एज और आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर, एंड द ब्राउजर स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन ऑन लोकल मशीन फॉर फर्दर यूज. जब भी सर्वर उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन दो, अगर उसको लग रहा है कि उसको वो डेटा ऑथेंटिक कस्टम के सिस्टम के ऊपर जा रहा है, ही विल बी कॉलिंग अ कुकीज़ इंटरनली. हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इट विल बी कॉलिंग, द सर्वर विल बी कॉलिंग, दैट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड द ब्राउजर. सो द लोकल machine will be working henceforth providing the future information about the cookies. So when next browser send your request to the web server, then it send those cookies information to the server, and server user this information to identify the user. जैसे मैंने बोला है कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया and I'm going for send mails, so मेरा सिस्टम कुकीज़ की इंफॉर्मेशन लेकर गूगल के ऊपर गया, जीमेल के ऊपर से फिर से मैंने सेंड की इंफॉर्मेशन, डेटा लाया. मिली सेकेंड्स, हार्डली कुछ मिली सेकेंड्स लेता है. आपको लग रहा है कि यार ये मेरा सर्वर तो मेरे ही सिस्टम पे बैठा है. इट इज़ नॉट देयर इन ऑन योर सिस्टम. द गूगल जीमेल सर्वर इज ऑलरेडी अवेलेबल फार अवे, सम थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर. थाउजेंड्स किलोमीटर में हम सिर्फ डेडिकेटली वी कैन रिट्राइव योर मेल very fastly. This is the work being done by the cookies. Cookies will be maintained and it will be helping us to move from client to server. Your request will be moved very fastly. Now what is there in the cookies? The anatomy. What is there in this file? जैसे हमने बोला कि text file, उसके अंदर होता क्या है? Now in text file, the anatomy यानी उसके अंदर होता क्या है? The cookies are usually set in HTTP header. ध्यान में रखना है, this is again hidden part. जैसे मैंने बोला, जैसे पोस्ट मेथड के अंदर कुछ हिडन डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं, इन सेम वे HTTP header contains information, although the JavaScript can also set cookies directly on the browser. Hackers nowadays preferably go for using a JavaScript for setting or making some changes into your cookies. This is an alternate way of creating a cookies, that is a JavaScript also. This is just for your information, but your programming language, if you are using PHP can create a cookies into this. Now what is there in the PHP script? So PHP script set a cookies might set header that contains information like this. So HTTP, the version name, the bytes of data, and it is saying okay. It maintains the data and the time also in GMT format. It goes for, tells about the server also, the which server it is, that what is the version of the service, what is the operating system, what is the PHP, and what is the version of PHP. It also will set the cookies like this. What is the name of the field, what values he have passed, expiry कब होने वाली उसकी, the time, the day, the time, the month, the day, तो कब जाके वो expire होने वाला, path, the domains, which website it will be handling that time, and connection close हुआ कि नहीं, open, text in which format it should be read, that is in a text and HTML format. So we will see it is always an HTTP information, the date when it is being created, the server to which it is being get connected, the cookies information like username, password, the expiry, this is the most important कि कब जाके इसने auto delete करना है. The type of information is maintained in the format of text. We call it as an text, we call it as a cookies. So okay, so here this information can be changed. ये हम information change नहीं कर सकते, but this information can be changed by setting the cookies. Okay, now how to do this? So setting cookies with PHP can be done. So for that purpose PHP provide a function called as a set cookies. So this is the function I will be highlighting with the yellow color. The name of the function is set cookies. This cookie function will, you can change, you can create your own cookies as and when required. The function requires up to 6 arguments. This you have to keep in mind. This question might be asked in MCQs, the how many arguments can be set into your with the help of set cookies. So 6 arguments should be called before HTML tag. So this is the most important thing, that you have to write your cookies before the HTML starts. So as soon as your programming starts, before the first line should be your cookies. So cookies are the function that can have a specialty like this. So set cookies, so the name, first parameter, जैसे मैंने बोला कि 6 arguments are there. The first argument is name, second one is value, third one is expire कब को होना है, fourth one is path, fifth one is domain, and sixth one is the security. Now what is there into this, you have to keep in mind and you have to maintain this information very precisely. तभी जाके आपको cookies समझ में आएगा. So now name, which variable you want to set. Now this
दिस सेट द नेम ऑफ द कुकीज, यानी ये आप उसको रन टाइम में भी नाम दे सकते हैं. यू कैन सेट अ नेम ऑफ द कुकीज एंड इट इज स्टोर्ड इन द एनवायरमेंट वेरिएबल कॉल्ड एज http कुकीज वेरिएबल. ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, आपको उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वेन एवर यू आर गिविंग एनी नेम इट विल बी सेट इन योर ऑन योर http कुकी वेरिएबल. Okay, so this set a name of a cookies and it is stored in environment variable. This variable is used while accessing the cookies. So यही variable आपका भागता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में और ये स्टोर होता है ब्राउजर के अंदर. Now this is the first parameter, that is name, और उसकी वैल्यू. जैसे मैंने बोला अभी मेरा नाम मतलब यूजर नेम, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट यूजर नेम जो आप डालेंगे. सो दिस सेट द वैल्यू ऑफ द नेम्ड वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल को आपने नाम दिया है उसकी वैल्यू वो सेट कर देता है. And it is actually went to store, so it is been stored into this one. This is the second parameter of your set cookie variable. The first parameter is your username, second parameter is your value. Now third parameter is expiry, कब जाके उसने auto delete करना है. Now this specify a future time in seconds, कितना सेकंड वो रहना चाहिए. So it is in 0000, that is HHMMSS seconds format in the GST, and it always starts with 1st Jan 1970, यानी यहाँ की वो cookies maintain करता है. So this is the default timing what we can set. So after this time cookies will become inaccessible. If this parameter is not set, the cookies will automatically expire when the browser is closed. So as the browser, अगर आपने वो value expiry नहीं डाल दी उसके अंदर, तो automatically as soon as the browser is closed the cookie will get expire. This is the most important thing that you have to keep in mind as far as the PHP is concerned. जैसा browser आप करेंगे cookies will be automatically deleted. Okay, so expiry we have covered, and now the path. Now what is this path? जैसे हमने यहाँ पर बोला है, so this is the cookies name, value, expiry जो हमने यहाँ पर पूरी डाली, this is expiry. Then the next one is path. The next one is parameter is path. Now what is path? The path, this specifies the directory from which the cookie is valid. The single forward slash character permits the cookie to be valid for all directions. यानी जैसे हमने यहाँ पर देखा है, it is forward slash means it is valid cookie. So this is auto being generated. The forward cookie मतलब क्या? This specifies the direction of which the cookie is valid. The single forward slash character permits, it allows the cookies to be valid for all direction. यानी to and fro के लिए allow करेगा. अगर वो forward slash रहा तो, अगर backward slash रहा, it will never ever allow for accessing the cookies. This is the most important. Now fourth one, domain. जैसे मैंने यहाँ पर बोला the domain. What is this domain? I have given some website. So domain means what? This can be used to specify the domain name. It is very large domain and use contains at least 2 periods to be valid. So all cookies are also only valid for the host and domain were created then. So this is the domain name, that is a website where you are being connected. So this is the fourth parameter was your path, and now the fifth parameter is the domain, the website where you are being connected. So it can be a number or it can be a text also. And last parameter, this is optional, that is security. This is an optional, this is not a compulsory, but it is an optional. So you can set to 1. अगर आपने उसको सेट कर दिया 1, टू स्पेसिफाई द कुकी शुड ओनली बी सेंड बाय द सिक्योर ट्रांजैक्शन. यानी आप अगर उसने उसकी जगह पर एस सिक्योरिटी इज इक्वल टू 1 बोल दिया, मतलब आप वहाँ पर HTTPS ही यूज कर सकते हैं. एंड इफ इट इज सेट टू 0, इट मीन्स यू कैन यूज HTTP. जैसे मैंने यहाँ पर मेरे मेल में, this is by default, there is no security features being provided, so it is accepting as 0. यानी मैं वो वेबसाइट को कौन से लॉगिन से देख सकता हूँ? 1 second, I will show you. 1 second. So till then it is getting loaded. So security features are most important. अगर आपने 1 बोल दिया, इसका मतलब it is following HTTPS. And if you are saying 0, it's just like a regular applications you are using, that is just your HTTP without security feature. So this is optional, you can use it or you cannot use it. So are you clear with these 6 parameters? Name,
value, expiry, path, domain, and security. These are the 6 parameters that you have to pass whenever you are creating a cookies. Yes, is everyone clear with the format of cookies and the function called as a set cookies for creating a cookie? Yes, I want to reply yes or no from your side. Then only I will move further for creating a cookie. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just I want to show you that browser. 1 second. 1 second. My system is getting hang. I want to show you because this is the most important thing, that is security features are nowadays are most important crucial part for any website, because whenever you are working with PHP you will be creating a connection with the database, and whenever you are getting connected to the database, most important thing is that you have to be very precise whenever you are managing your data. So HTTPS is nowadays been frequently used by all portals for the purpose of security, so it should not get hacked by anybody layperson, because cookies are most important, and nowadays hackers are working on a cookies and session to cracking it. If it is being cracked, automatically your portal, your accessibility, your authenticity will be hampered. So 1 second, why the browser is not opening? Just I will stop my server for a few seconds. Let us see, because it is might is taking some space. Okay, so it is there. Now see in this mail, 1 second. हैंग हो रहा है सिस्टम. This need to be shown very this is most important, I think so, because when we talk about cookies, writing cookies, setting cookies is not that much big. See, when you go for Google Meet, see here you will see this is secured. Is it visible to you now, this one? Yes. uh, Google Meet I have shown you on a screen. Is it visible to everybody? Yes. Yes, sir. Okay. And we'll go for mail also. When I did see this, when I click on this portal, this the security features will be active, visible. देखो, now again see this HTML, HTTPS is shown on your browser. So that is one more thing that is secured. And you see in a website of Unipune, just I show move back to the previous pages. 1 second. The default page of HT exam, that is Unipune, you will see that is a basic HTML, and nowadays people are maintaining the cookies in a very precise way. So secure HTTPS is secured version of HTTP that maintains the security features of maintaining the cookies. So this is optional, you can use this one, but nowadays it is made compulsory for any website you are being created, you are using this HTTPS. So basically I want to show you, but my system is getting hanged. मुझे पता नहीं क्या होगा उसको. Now see, this is HTTP result portal. But when you log in as a student, you will find you will be opening your security feature. So it will be moving you. It will be diverting you to the secured page. Is it clear to everybody that what is different between HTTP and HTTPS and how it is being maintained uh, in your cookies? Yes. So if it is 1, it is HTTPS, and if it is value is 0, it means it is just an HTTP. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay, the 6 parameters: name, value, expiry, path, domain, and security.
Okay, so we will be writing a small cookies. Just how to write a cookie, that you have to keep in mind. This is the first line you have to write before the HTML. Before writing your HTML code, you have to first create a cookie. So whenever you want to create a cookies, you have to write a cookie within the scriptlet tag, and the name of the function is set cookies. The name, this is nothing but the value. The time, that is nothing but the third parameter, that is expiry. Fourth parameter is the path, means it should be maintain. अगर फॉरवर्ड स्लैश होगा तो हम कुकीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं. एंड फिफ्थ पैरामीटर इज़ योर डोमेन. तो मेरे पास कोई वेबसाइट के लिए नहीं है, तो फिफ्थ पैरामीटर आई हैव नॉट पास्ड एनी वेबसाइट नेम बिकॉज आई एम जस्ट टेस्टिंग इट. And last parameter is I want to make, not want to make it secured. So for not making it secure, that is I don't want to make it HTTPS, I will be using the zero parameter, that is just 0. Is it clear to everybody? So this is the first variable name with value, second with age with value. So आप बोलेंगे ये क्या है? Expiry means what? Time. अभी का जो time है, the system time will be taken, system time will be taken, and 3600 milliseconds will be added. Now this is just a milliseconds been added. Okay, so this time will be, after that it will be automatically get expired. मतलब क्या, ये variable और उसकी appropriate value will be getting expired after this time is getting covered. So time will be getting the server time plus 3600 milliseconds at the most will be occupied for the server cookies to be maintained. If it is not there, the automatically the cookies will be expired. Third parameter is fourth parameter is path, fifth parameter is domain, and last parameter is the security. So this we have set 2 cookies over here, and this is how we are getting it. This is the word simple way of creating a cookies. Is it clear to everybody? ये आउटपुट में कुछ दिखाई नहीं देगा because there is nothing to be shown of cookies. That बस इतना ही हम देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से cookies को बना सकते हैं. So shall I move for writing code into this cookies? So I am started my server, and I just go for test. एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम cookies बनाना सीखेंगे. Is it clear to everybody how to create write a cookie? Simple. I don't know why the system is getting slow. File. New. And I'm pasting my code and saving it into my server. So this is just a set cookies. 6 parameters keep in mind. हमेशा ध्यान में रखना है 6 parameters. Name of the cookies, value of the cookies, expiry, path, domain and security. ये 6 चीज़ें हमें देना ज़रूरी है जब भी हम कोई cookies बनाएंगे. ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, मुझे पता नहीं ये क्यों स्लो हो गया. 1 minute or 2 minutes. Now this is just example. I will share you. Still will be moving further. जब तक वो regular position में आता तब तक हम आगे continue करेंगे. So we can set a cookies also, and at the runtime, if you don't require, you can change the values also in the cookies, and if you require, you can delete the values from the cookies also. So for that purpose, what is required is that you need to know in detail about the cookie variable. $_cookie is the name of the function. So 1 second, I'm just moving to the PHP notes because it is slow. I don't want to waste your time. We'll go for this execution also, no problem. Have you received the, मैंने जो last week में जो भेजा था assignment की list, has everybody written that assignments? सभी ने लिखा है कि वो आपके जर्नल के अंदर? Yes. दीपाली, देवयानी, कोमल,
Megha, have you written into your journal book that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Be prepared at any moment the practical examination may start. At any moment the practical examination may be scheduled by the university. Okay. Okay, चलो ये मैं दे सेव कर देता हूँ. Sir, Yes. Yes. sir, Yes. बोलो बोलो. प्रोजेक्ट रिलेटेड म्हणजे लेक्चर संपताना सांगितलं तरी चालेल. बरोबर बरोबर. So my cookies.php. So I have stored into my Apache server. Okay. And now I move for the browser to get executed. So this is my cookies.php. ये वाली files मैं delete कर देता हूँ because unnecessary हो चुका है. So this is the name of the cookie and this is with the value, the time and everything. So just I move for the server to get connected. So let us see whether the server has started or not. Yes, it has started. 1 second, we'll move further. तब तक ये ओपन होता है तब तक we'll move further for. Now this is the way while the cookies are created. I will show you how this has been executed in the next example, but till then we need to move further because these are the most important thing that we need to understand. Now whenever you are writing a cookie like this, if you want to access it at any movement, any movement you want to access it, so how to access it? So accessing a cookie is within a PHP, and what you have to keep in mind. So the PHP provide a many way to access the cookies. Simplest way you can use this object called as $_cookies. ये object को use करके आप वो cookies को access कर सकते हैं. और सेकेंड वे जो मैंने सेट कुकीज में मैंने बोला था, यू कैन यूज दिस ऑल्सो. सो $HTTP_cookie_vars, दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल. सो दोनों में से जो सिंपल लगता है यू कैन यूज इट, बट बेटर दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज $_cookie. दिस वेरिएबल विल बी हेल्पिंग अस. दिस इज नथिंग बट एन एसोसिएटिव array that maintain all information of the cookies what are being created with the values and everything. So you can use this function also, variable also, or you can use this variable also. Choice will be yours. So if the cookies are set and you want to access it, it's very simple. Echo the cookie variable name, and you can use this also. So you can access this also, and you can access with the help of the function. This is nothing but an associative array. ध्यान में रखना, it is always in a square bracket. You just give the name of the cookies. The cookie values will be displayed on a screen. So that is the most important thing. So you just keep in mind. So as far as the cookies accessibility is concerned, now how to use this one. So मैं जाता हूँ उसी example के ऊपर, because browser is not supporting. I'm not getting. ना हमने क्या करा था, ये पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल में कुकी को सेट किया है और दूसरे एग्जाम्पल में उसको हम रिट्राइव करके देखेंगे. दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ माइंड कि वन दैट इज setting a cookies will be done by one dot some file .php file, and the second file will be accessing it into your server. So 1 second, I need to stop this one. नाउ टिल देन आई वांट टू डिस्कस, जब तक ये होता नहीं तब तक हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है. नाउ आई हैव ऑलरेडी सेंड वन स्मॉल रिक्वायरमेंट बीन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. व्हाट विल बी द पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. Now creating a website is not nowadays not a difficult task. You can create a website, a static website, probably a static website, and these people are expecting a dynamic pages to be added at the into the system. Now what is the dynamic pages that बहुत बड़ी website ये इनके पास से expect नहीं कर रही. What is required is that you have to create a synopsis कि आपको वो website में करना क्या है. For example, you want to create a website of your what you call as student portal. You want to create some student portal. What you have to do is that all student related information, static information वेबसाइट के ऊपर डाल दो. जैसे हम जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो आप ये ऐसे कुछ वेबसाइट डाल दो जिसके अंदर ई लर्निंग कंटेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमने वीडियोस और कुछ आपने बनाना है उसको रियल लाइफ में उसको आपको इंटीग्रेट करना है. यू कैन डू विद द ऑडियो वीडियोज एंड ऑल दोस थिंग्स. एक सिंपल एग्जांपल की मैं बोल रहा हूँ. एंड
you can create a home page, and in the home page you can give some links to the different websites, या different what we call as a pages, जहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिकली कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं. अगर आपको स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड व्हेन यू लोड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटेल वाइज समरी शुड बी प्रोवाइडेड, यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सब डिटेल आप उसके अंदर कर सकते हैं. वो हो जाएंगी स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक मतलब क्या, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं. एंड व्हेन यू गो फॉर डायनेमिक, यू नीड टू प्रोवाइड सम कंटेंट लाइक दैट इज नथिंग बट योर लॉगिन करने के बाद यू हैव टू मेंटेन अ सेशन एंड कुकीज, एंड यू कैन मेंटेन सम डेटाबेस जहाँ पर आप कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और जब चाहिए उसको आप रिट्राइव कर सकते हैं विद योर सम क्वेरीज. वो मैं ये वीक में कवर करने वाला कि किस तरीके से हम डायनेमिक उसके अंदर डाल सकते हैं. आई विल शेयर द कंटेंट ऑल्सो तो हाउ टू गेट कनेक्टेड टू द MySQL. बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट you create a static website using your CSS, your HTML. Node की कोई ज़रूरत नहीं है. Then you can use PHP also over there, and you can get connected to the database of MySQL and retrieve the data, add some record into a database. That type of things are expected. Not very complicated, not very what you call as in a complex level. इट शुड बी वेरी सिंपल. आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको वो सब कंसेप्ट समझ में आए जो आपको ये सब्जेक्ट AIT में सिखाई है, या फिर इसके पहले आपको जैसे जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी था, सेम थिंग्स विल बी हैपनिंग इनटू PHP. आप क्या आप डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, वो चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल मेरे सिस्टम को क्या, 1 सेकेंड, लेट इट बी. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम कैसे हैंग हो रही है. सो 1 सेकेंड, आई एम डिलीटिंग सम थिंग्स. अगेन आई विल रीजॉइंट. No, let it be. I will show this example in tomorrow's session, but previously, before that, I want to show, we'll move further for the cookies concept. And as far as the demonstration of this is concerned, tomorrow I will be showing, or if time permits, in evening session also we'll be continuing this one. So let us move to the content. ये मैं भेज देता हूँ, आप भी वहाँ पर practice कर सकते हैं. Just an oral part. कुछ इसमें कुछ करना नहीं है. Code will be provided. I just go for trial and error, and you will catch everything. Yes, any doubts, any questions you want to ask as far as the previous content or previous chapter, if you are expecting कोई questions पूछना चाहिए. Yes. Okay, I will restart now. Again restart. 15 minutes रहे हैं मेरे. We can rejoin करेंगे हम दोपहर के सेशन में. Okay. Excuse me, sir. Yes. सर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते क्या? Yes, you can. If you are flexible with JavaScript, you can use it. ओके. और सर एक और क्वेश्चन था कुकीज के बारे में. Yes. सर अपना जो, अगर समझो अपन अमेज़न पे कुछ देखने गए तो अगर वेबसाइट एक्सेस की तो उसके बाद उधर ऐसे आता है, एड्स आती है जो अपन ने देखा था पहले. Yes. हाँ, तो सर ये कुकीज यूज करते हैं क्या, एड्स? नहीं, ऐड के लिए कुकीज़ की कोई ज़रूरत नहीं. ऐड जब भी आते हैं ना, दैट इज़ जस्ट एन वो फीचर्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, यानी वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. बट अभी आप बोलेंगे सर मैंने जूते को क्लिक किया था तो मुझे सिर्फ जूते की ऐड आती है, तो दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, कि ये जो कस्टमर है इन्होंने किस चीज़ को क्लिक किया है, तो वो ऑटोमेटिक सर्वर के ऊपर वो पैरेलली डेटा स्टोर करता है कि यू हैव एक्सेस्ड शूज़ फ्रिक्वेंटली, एंड यू आर एक्सेसिंग ए शूज़ विद रेंज ऑफ 2000 to 4000. तो क्या करेंगे, आपके सामने जब भी ऐड आती है या फिर आप जब भी फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे जाते हैं तो क्या करेंगे, आपका वो डेटा रिट्राइव करके AI लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वही ऐड आपके सामने, यानी वो शूज़ के ही ज़्यादा करके आपको दिखाई देंगे. नाउ ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिखाई देगा. यू विल सी दिस इनटू ई-कॉमर्स वेबसाइट, जो भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है वहाँ पर आपको दिखाएंगे, बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू स्पेंड
on AIs, because AI is very difficult, because huge data is maintained, और उसमें से सॉर्ट आउट करके हर एक यूज़र के लिए उसके फ्लेवर के कंटेंट वो स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं. सेम थिंग इज डन विद यूट्यूब. यू विल सी विद ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जहाँ पर कमर्शियल यूज़ होता है. Because you know YouTubers are nowadays are earning monies in lakhs and crores of rupees. Lakhs and crores of rupees are income daily monthly आ जाती है उन लोगों को, because उतना स्पेंड लोग करते हैं टाइम यूट्यूब के ऊपर. सेम थिंग इज हैपनिंग विद द ई कॉमर्स वेबसाइट. So AI is been used, but cookies is not for that purpose. Cookies is just a secure data that is maintained by the browser, और ये ब्राउज़र तक ही सीमित होता है, ये इंफॉर्मेशन ब्राउज़र तक ही सीमित होती है. बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, योर सर्वर कैन एक्सेस हु इज़ द यूज़र, कहाँ से वो यूज़ कर रहा है. ओके, सो योर सिस्टम इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेसिबल ऑन अ सर्वर. दैट इज़ द ओनली थिंग विद दैट कैन बी अचीव विद द कुकीज़, नॉट मोर देन दैट. यस, तो मैं ये सेव कर देता हूँ. इट इज़ माई कुकीज़ डॉट PHP. हो गया मेरा सिस्टम, थोड़ा सा ओके लग रहा है अभी. ओके, सो लोकल होस्ट, वो तभी भी उसको आने से पहले तो ये आप यू कैन प्रैक्टिस ऑन ए सिस्टम ऑल्सो. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल. मैं थोड़ा इसको थोड़ा इलाबरेट करता है. अगेन आई वांट टू मूव फॉर द टेक्स्ट थियरी पार्ट. So the first example that we have written is that we have just set a cookies, a separate PHP file. You see, this is a separate PHP file I have created, separate PHP file, जहाँ पर सिर्फ मैं 2 cookies को set करूँगा. Okay, and you can save it with any XYZ name, whatever name you want to give it. This is just it will be saved. Now this is a separate PHP file. Now whenever I am setting it with some time constraint, it means now this is stored into my browser. Now with the help of second file, now see this, with the help of second file, I will be accessing the name and I will be accessing the age of this person called as John Watkin. ये मैं नेक्स्ट पेज से एक्सेस कर सकता हूँ. ना हाउ टू एक्सेस दिस आई विल बी यूजिंग द ऑब्जेक्ट वेरिएबल कॉल्ड एज एन $_ cookies से मैं वो पहले वाली PHP फाइल का डेटा सेकेंड वाली फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ. ना हाउ टू गेट एक्सेस, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपने कौन से नाम की कुकीज़ बनाई है, बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है. इफ़ यू जस्ट फेच दैट वन, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कुकीज़. सो जैसे मैंने बोला कि उसका डोमेन क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, एवरीथिंग कैन बी एक्सेस. सेम वे विद द सेकंड कुकीज़ ऑल्सो यू कैन एक्सेस इट. और ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं. मैंने जो बोला है, आइदर यू कैन यूज़ दिस $_ और यू कैन यूज़ दिस $http_cookie_var. This is again a second way of accessing it. This is the only 2 ways you can access the cookies. तो मैंने ये example में ये दिखा था, this I have created, that is my cookies, and ये second example में create करता हूँ, this is new, and इस new में मैं ये second code को paste कर देता हूँ. Okay, मेरे system थोड़ी slow है, just cop up with me. आज उसको क्या हो गया मुझे पता नहीं. This is second file. And you will see I am not setting something, so I have not written into this at the top. So this is okay, so this is my cookie previous one, and I will save it as my cookie demo.php. तो ये एक के नीचे फाइल आ जाएंगी. So I am saying it with my cookies demo. Now cookies are basically very unsecured. Secured website like e-banking and all those things, wherever there is a security is most important. In those situations, cookies are not that much important. Cookies has somewhat more important drawback, that is cookies object are stored on the client machine, और हमने जिस तरीके से यहाँ पर उसको सेव किया तो हमारा ब्राउज़र का वीकनेस हो सकता है, यानी ब्राउज़र स्लो डाउन हो सकता है. they are called as a my cookies demo.php. okay, so this is the सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, सो ये मैंने एक कुकी बनाई जिसके अंदर मैंने सेट कर दिया है, एंड सेकेंड प्रोग्राम बनाए कुकीज़ का जिसके अंदर मैंने वो नाम को वो रेफ़र किया है, वो एज को जो रेफ़र किया है, जो मैंने इसके अंदर इनिशियल स्टेज में लिखा है. ध्यान में रखना है, फर्स्ट रूल यू हैव टू मेंटेन, वेन एवर यू आर सेटिंग अ कुकीज़ यू हैव टू राइट बिफोर द HTML. You have to write before the HTML. This is the thumb rule you have to maintain. Okay, this is the thumb rule you have to maintain. You have to write before the cookies, that is before the HTML code. Now I am moving to the server. So my
project. 1 second. 4 5 minutes. I will just want to show you how we can access from one page to another page. That is the one thing I want to show you. Now this type of features are being used in cookies. Now cookies के ये फीचर ज़्यादा करके ई कॉमर्स की वेबसाइट ने यूज़ किया. कैसे? आप जब भी कोई चीज़ को ऐड करते, ऐड टू कार्ट करते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती, यू ऐड टू द कार्ट एंड फाइनली यू गो फॉर द पेइंग दैट अमाउंट. बराबर है कि नहीं? फाइनली यू गो फॉर पेइंग दैट अमाउंट. ना वो व्हाट इज देयर, ये आपने ये चीज़ खरीदी थी, यानी आपको पसंद आई तो आपने वो कार्ट में ऐड कर दी. ये मेंटेन कौन कर रहा है? बिकॉज दिस इज नॉट मेंटेन ऑन अ सर्वर. ध्यान में रखना है, आपने अगर 10 चीज़ों को ब्राउज करके आपके कार्ट में ऐड किया है तो ये सर्वर नहीं कर रहा. ध्यान में रखना है, दिस इज बीन मेंटेन बाय योर ब्राउजर. This has been maintained by the browser and the cookies is working on behalf of a server onto your system. यानी आपके ब्राउजर के ऊपर कुकीज वर्कआउट करती है आपको जो भी चीज़ कार्ट के अंदर डालनी होती है. This is real implementation of cookies nowadays. Timing is running, but still I am not able to execute one your cookies example. Let us see how it is not, why it is not responding. चलो जाने तो अभी क्या करना है, अभी सिस्टम ही इतना सपोर्ट नहीं कर रहा आज, क्या उसको क्या. One second, I will. Am I audible to everybody? Yes. Am I audible now from my mobile now? Yes. Am I audible from my mobile now? Okay. Now this is my system is already getting hang. So ये demonstration I will show you in tomorrow session. Tomorrow we will be going into detail about ये example को मैं finalize करूँगा. How we can delete a cookie also. Then in tomorrow session we will be working on how to create a session on a server. ये अभी ये जो client के ऊपर किया था वो हम server के ऊपर कुछ session बनाएंगे. उसको हम किस तरीके से create कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. And tomorrow itself we will be entering into database connectivity. किस तरीके से हम database के साथ connect करेंगे. कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से हम डेटा के साथ इंटरैक्ट करेंगे. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल ऑपरेशंस विल बी डन विद योर एप्लीकेशन. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और वो आपको इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसके अंदर, किसके अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ इज द थिंग इज दैट आई विल बी शेयरिंग माय मोबाइल नाउ. And see, in this I will be sharing you the yesterday's sharing. हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको? Yes sir. Okay. So in this I want to show you that in AIT what we have seen in previous yesterday's session, that is what is expected from you all. What is expected from you all in this one. So the mini project is an assignment that the student need to complete at the end of the every semester to strengthen the understanding of fundamentals through effective application of the subject learned. So you need to create a working project using tool and technique learned in semester. Now what all tools and techniques you have used, that is you is expected that जो भी हमने पढ़ा था, AIT जो हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने HTML5 को पढ़ा है, ऑडियो वीडियोस एंड एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न कैनवास, दैट यू हैव नीड टू इम्प्लीमेंट. कोई डोमेन फाइनलाइज कर. द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड वन मिनी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल डेट. तो दोनों को कोऑप करके ये सेमेस्टर में कंसिडर किया जाता है. सो यू कैन स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ टाइटल. ध्यान में रखना, यू कैन स्टार्ट टू क्रिएटिंग अ टाइटल एंड this title will be helping you I think so. This is visible to everybody. now Okay. Now, students may take up the mini project
in the first semester and on the course learned in the semester, and for the every semester उनको सबको mini project करना है ये Hello! Hello! now you have to create a module wise. If I am talking about a student, then you have to create a student and all those things. Then student related जो भी information होंगे उसके assignments होगा कुछ होगा. So based on that parameter, there are huge domains in the market. Huge domains in the market. You can take any domain like a grocery shop or your any e-portals. यानी कोई कुछ भी डोमेन के ऊपर वेबसाइट आज मार्केट में सभी वेबसाइट्स है. आपको जो पसंद है दैट इज जो आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं. You can create that one, and सिर्फ उसके अंदर little bit database connectivity is required, not very much complex. I am again saying that it is not expected that you should create a website with total database connectivity from start to end. ऐसा वो expect नहीं कर रहे. These people are expecting that you should create, at least you should implement the things you have learned into the previous session. Okay, so get starting. You can start your examples. WordPress जो मैंने पिछली बार डाला था, with the help of WordPress you can create a huge applications. बहुत फास्ट में आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं. 10, 15, 20 pages of static website is more than enough for you to demonstrate your project. बस आपके पास क्या होना चाहिए, what is the intention of creating that website, वो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है. और 2-3 पेजेस हम उसके अंदर डालेंगे, जैसे फीडबैक फॉर्म हम डालेंगे. इफ यू वांट टू ऐड एडमिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू ऐड फॉरगॉट पासवर्ड, और जैसे जो कुछ छोटी छोटी चीजों का हम उसके अंदर डालना सीखेंगे ये वाले सेशन में. We will retrieve some data from a database and that will be displayed on a screen also. That type of feature will be again been done in this applications. तो मेजर पार्ट जो एक्सपेक्ट किया जाता है आपके पास से, दैट इज यू शुड क्रिएट अ वेबसाइट, एटलीस्ट फर्स्ट स्टैटिक वेबसाइट, एंड वी विल बी प्लगिंग दोस डायनेमिक पेजेस एट द एंड ऑफ द सिस्टम. ओके, if you have any doubt you can speak with me now. Yes, सर वर्डप्रेस मध्ये केलं तरी चालेल. चालेल ना, वर्डप्रेस मध्ये केलं तर चालेल ना, नो प्रॉब्लम. वर्डप्रेस में किया तो भी चलेगा. डायरेक्टली आपने जैम सर्वर के अंदर भी प्रोजेक्ट को डाला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेड, दैट इज जैसे फर्स्ट लाइन में बोला है, वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है. वर्किंग डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको कि वो आप बना रहे हैं, बन रहा है, या फिर क्या क्या उसके अंदर आपने बना है. यू शुड डिफेंड योरसेल्फ. यस सर म्हणजे पायथन केली तरी काय म्हणली मेघा? पायथन लँग्वेज म्हणजे जे पाइथन, शिकले हाँ पाइथन है. चॉइस इज योर्स. कोई PHP में भी कर सकता है, कोई जावा में भी कर सकता है. जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते. जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी, सेमेस्टर 2 में पढ़ी थी, ये 2 सेमेस्टर में जो पढ़ा है वही चाहिए. कल जाके आप बोलेंगे सर मैं .NET में करता हूँ, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज आप .NET को आपको सिखाया नहीं यूनिवर्सिटी ने अभी तक. ओके, आप बोलेंगे सर मैं एंड्रॉइड में करता हूँ, देयर इज नो चांस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड. ओके, सर जो टेक्नोलॉजी हाँ स्टैटिक और विद सम डायनेमिक फीचर इनटू दैट, लिटिल बिट डायनेमिक फीचर इनटू दैट. वैष्णवी समजलं तुला? हो सर. Create a static website initially and add some dynamic pages at the end, no problem. And there is no documentation for you, बस आपको सिनॉप्सिस मैडम को सबमिट करना कि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप कहाँ से कहाँ तक. दैट्स इट. नो डॉक्यूमेंटेशन, नो DFD, नो क्लास डायग्राम, नो एक्टिविटी डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे आपके पास से. जस्ट एक एप्लीकेशंस आपके पास से एक्सपेक्ट करो. एंड दैट आई थिंक सो यू कैन क्रिएट विद इन 1 or 2 days or 3 days. दैट इज मोर देन इनफ. श्रेया बरोबर आहे का नाही? 2-3 दिवसात होईल का नाही? यस सर. देवेनी होईल का नाही? यस सर. हाँ चलो फिर आज से चालू कर दो. अगर आपको मेरे को भी लिंक भेजो तो भी चलेगा. यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इफ एनीवन हैज स्टार्टेड इन टुमारो सेशन, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन शो योर डेमोन्स्ट्रेशन टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि उनको भी समझ में आ जाएगा. फिजा आपका कुछ रेडी है कि नहीं अभी फिलहाल? यस फिजा. नो सर. ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ. ओके सर.
सर फक्त HTML CSS आणि JS केलं तर चालेल का? चलो नो प्रॉब्लम। वेबसाइट मेन इंटेंशन है आपका प्रोजेक्ट बनाना, योर स्कोप शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्यों बनाना है, दैट्स इट। ओके सर। योर स्कोप शुड बी वेरी मच क्लियर, दैट्स इट। ओके, वैसे कुछ नहीं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग a very huge application from you, just a आणि सर मागच्या initial stage का। पण चेक करता मॅम म्हटलं, काय म्हणले ते? मॅम म्हटल्या होत्या की मागच्या प्रोजेक्ट पण चेक करणार. हो हो, 2 प्रोजेक्ट होतील ना, तर मागचं मला माहित नाही त्याच्यातलं काय, पण मी ह्या सेमिस्टरचं तुम्हाला सांगतो, मागच्या सेमिस्टरचं मॅडम क्लिअर करतील। मॅडमचं लेक्चर आहे, मॅडमला विचारा तुम्ही आता। हाँ, और ये सेमेस्टर का जो एक्सपेक्ट किया उन्होंने, दैट शुड बी, यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस वन कि आपने तो चालू करना ही चाहिए एनी हाउ, एंड 4-5 डेज इज मोर देन इनफ मेरे ख्याल से। 4-5 डेज, बिकॉज स्टैटिक वेबसाइट बना रहे आप, उसमें सिर्फ लुक एंड फील के ऊपर ज्यादा फोकस। यस, Yes, shall we stop for the day now? We'll meet in tomorrow session and we'll continue the cookies and session. Yes. ओके सर, Okay. थँक्यू सर. Okay. कोणती पावती? पावती लगेच जनरेट होती सर, लगेच मेल येतो सर। हो, लगेच मेल येतो, वेळ चेक करा तुम्हाला। आणि तुम्ही लॉग इन केला असा ना पोर्टलवर, तर लगेच येते पोर्टलवर 15-20 मिनिटात। फोन पे नाही केलं होय, म्हणजे पोर्टलवरती जाऊन केलं ना? हा हा, मग काय नाही येऊन जाईल तिथे, येऊन जातं। नाही येतं ते, एखाद दिवशी 1 दिवस बी लागतो कधी कधी।